we'll never be the same. Called a case, hit the gavel. I never thought it'd end like this, with a fight, not a kiss, nothing's right. Think we missed all the pride that I ditched. Cause when I reminisce every night, felt dismissed and I tried to forget all the pain. I can't feel no more. I think you finally closed that door. I think you finally cleaned your drawer. I guess this is the price of war. And as I sit I write these chords. I still stay up at night, of course, and think about what might restore my heart so I could feel once more. I just need to fall asleep, just to fall asleep. I think I'm in too deep, yeah. I just need to fall asleep, put my mind at ease. Don't wanna think, just breathe, yeah. Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works. And I know that you've been hurt, but I know we've had it worse, yeah. And I don't wanna fake it any more than I have to. Feeling tortured, I grab you, try to snap us both back to when I felt like I had you. It just feels like a bad mood, but you're turning your back soon. I've been stabbed in the back too. So it's over now, it's over now. There's no way we can work it out, can't work it out. Every word that's coming out your mouth is filled with doubt. I don't have time to figure out what that's about. I don't wanna break you down, but I could feel your emotion, and there's nothing to open. I just think that we're broken. I could feel the erosion, like the coast to the ocean. Every day we're approaching just another explosion. To fall asleep, just to fall asleep. I think I'm in too deep, yeah. कहाँ जा रहा है? इधर बैठो ना, उधर बहुत छोटा आ रहा है। अच्छा सीन खराब हो गया जी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं समुंदर कट्ठा लेक, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ी है, क्योंकि हम लोग इसको ढूंढते ढूंढते अब्बोत्ताबाद पहुँच गए थे। तो बस थोड़ी सी ख्वारी हुई है, लेकिन माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत है। आपको मैं थकन इधर उतर गई हमारी जगह देख के। अब आप मेन रोड से नीचे उतरते हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी पड़ती है या बाइक। साफ रोड है, उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर और कच्चा रोड से नीचे उतरते हैं तो आपको 3 किलोमीटर गाड़ी साफ रोड पे चलाने को मिलती है। उसके बाद 2 किलोमीटर कच्चा रोड आता है। जो गाड़ियाँ मतलब होंडा वगैरह हो गई है वो काफ़ी लगती है नीचे, क्योंकि रोड इतना पक्का नहीं है, पथरीली रोड है काफ़ी। कोशिश करें एक एक्स्ट्रा टायर साथ जरूर लेके आए। एक तो वैसे ही होता है, 2 साथ होने चाहिए। आप बताएं कि आपको झील में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? झील में सबसे पहले तो मुझे पानी यहाँ का बहुत अच्छा लगे, क्योंकि साफ़ सुथरा है। और दूसरा ये है कि लोगों ने, चलो अभी लोगों को इतना पता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी लोगों ने अपनी जाहिलियत का मुजाहरा किया हुआ है। इधर पानी के अंदर इन्होंने गंदे रैपर्स वगैरह फेंके हुए हैं, तो मेहरबानी करके ये चीज़ें ना फेंका करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको साफ़ रखने की। से नहीं, ये नवी झील है। मैं बोलता हूँ ऐसा मसला है कि ऐसा कह रहा हूँ कि गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। कूड़ी ये गंदगी जो फेंकते हैं इनको मना करें को अपना। ऐसे है कि गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके? हाँ, जगह नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। पानी यहाँ का बहुत साफ़ सुथरा, और जगह भी नो डाउट बहुत। तो लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? लोगों को यही पैगाम देंगे कि आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन ख्याल करें आप भी हमारी तरह अब्बोत्ताबाद ना पहुँचें और जगह को साफ़ रखें। चले, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।